Hey everyone, hello to all of you and a very good afternoon. Please let me know if my audio is clear, video is clear. Also, um, okay, we'll be continuing with the session जो हमारा अभी editorial का चल रहा है. For those who don't know me, I'm Niharika John Mehra. I teach English for government exams and आपको मेरे बहुत सारे sessions यहाँ मिलेंगे. I have sessions under our courses as well. So grade B पे वेलकम है सभी का. लाइक और शेयर कर दो फटाफट वीडियो को एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल अगर अभी तक नहीं करा है. Just gonna wait for more students to give me confirmation. All good? Okay. Let's wait for another minute so that we can have more students here. बाकी जो live देख रहे हो आप मुझे please confirm कर दो that everything is working fine with you or not. Okay, I believe it is fine. Great. So, the article that I have taken out of two articles of the Hindu is Sobering Assessment on the IMF Forecast World Bank Report. So, the richer nations must show more support for the poorest countries. So, the idea that we get from the title and the subtopic of it is that you will be getting to know something जो international level की बात हो रही है, to understand the mindset of the author, the editor, and he will be helping us understand कि किस तरीके से poorest countries को requirement है किसी चीज़ की and all those things. So we are going to start with some vocabulary. Spectre is a ghost or a spirit. It's like not exactly ghost बट जिससे लोगों को डर लगे उस तरीके का कुछ. तो भूत एक डरावना प्रतीक, समथिंग विच इज सो अनप्लेजेंट, इट इज समथिंग पीपल विल हैव अ फियर ऑफ. ओके, नॉट टेकिंग इट into other realm or something. So phantom, apparition, reality and certainty are the antonyms. So of course these things, they don't exist but people fear them, that it might happen या हुआ तो कितना बुरा होगा. The specter is the that word. The specter of economic recession, that means a sign that is fearsome, that recession haunted the global economy. It is said metaphorically. Recession का भूत नहीं होता है पर एक चिन्ह के समान हम इसकी बात कर रहे हैं. Then we have the word resilience, which is very commonly asked in the exams, and it means the ability to recover quickly from difficulties and toughness. See, strength is a very common word. Strong होना is a very common word. उससे थोड़ा सा एक specification पे आए, so there is the word resilience. Resilience is इतना tough होना कि या इतना flexible होना कि तोड़ नहीं सकता कोई उसको. It will go through, it will recover quickly from difficulties. ओके, तो उस केस में उसे प्रतिरोध क्षमता बोलते हैं. रेजिलियंस इज यूज्ड अ लॉट इन फाइनेंस रिलेटेड, कंट्री से रिलेटेड जो टॉपिक होते हैं. सो रेजिलियंस इज नॉट जस्ट बीइंग स्ट्रांग बट द काइंड ऑफ स्ट्रेंथ वी आर टॉकिंग, वो आपको पता होना चाहिए. एंड्योर करना, सह लेना, फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी कैसे सिनोनिम है इसका? जो चीज़ फ्लेक्सिबल होती है वो दो हिस्से में टूटती नहीं है अपने आप से एकदम से, है ना, अचानक से. तो इन दैट केस रेजिलियंस, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सिनोनिम हो गया. वल्नरेबिलिटी एंड फ्रेजिलिटी.
वल्नरेबिलिटी में जल्दी से असर हो जाएगा, फ्रेजाइल है, टूट जाएगा, रिकवर नहीं होगा. सो दीज वर्ड्स बिकम एंटोनिम. डिस्पाइट फेसिंग न्यूमरस चैलेंजेस, इसके बावजूद कि बहुत सारे चैलेंजेस थे, द इकोनॉमी शोड रिमार्केबल रेजिलियंस. इकोनॉमी में हमें बहुत मजबूती दिखाई दी इन द वे दैट इट बाउंस्ड बैक इन अ वे. डाइवर्जेंस इज विपरीतता या फिर विचलन, वेयर द थिंग इज मूविंग अवे फ्रॉम द पाथ जिसमें जाना चाहिए, या फिर देर इज इनकंसिस्टेंसी हाउ द ट्राइजेक्टरी शुड बी, इट इज गोइंग अवे फ्रॉम वन अनदर, लाइक दैट. ओके. एंटोनिम इज कन्वर्जेंस एंड यूनिफॉर्मिटी. दैट मीन्स एक साथ चल रही हैं चीजें, आर इन द लाइन विथ the route or with whatever it should be. There was a clear divergence in opinion. So opinion were different among the members of the committee. Divergence is very simple. Then we have is scarring. Now एक बात ध्यान देना. If you have only one R in the word, it is scaring, डराना. But if you have double R like this, it means scarring. So ये आपके word usage में, vocabulary based question में, you can get to see this question, this word. The process of becoming scarred, leaving a permanent mark on something. This mark could be mental, emotional, physical, any kind of it. तो किसी भी प्रकार का दाग या निशान, छाप, जो कि not in a good way है, उसको हम scarring बोलते हैं. That will hurt us, give us a pain, that kind of mark. Blemishing, marring, healing and repairing will be antonyms जिसमें चीजें सही हो रही हैं. The accident left a scarring memory in his mind. So memory जो कि एक ऐसा निशान छोड़ गई जो हमेशा वो सोचता होगा एक्सीडेंट का, तो घबरा जाता होगा. ऑफ कोर्स यहाँ पे हमें जो देखने को मिलता है, इट इज पेनफुल मेमोरी. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट, इट इज स्कारिंग. वो भुला नहीं पा रहा है उसको. Impairing is weaken, damaging something. किसी चीज को किसी चीज से हानि हो रही है, क्षीण हो रही है. स्पेशली अ ह्यूमन फैकल्टी और फंक्शन, स्पेशली व्हेनेवर हमारे सेंसेस कुछ काम नहीं करते हैं अगर, तो हम वो चीज में इम्पेयर वर्ड का यूज करते हैं. Guys, when I explain the context, it's very important for you to keep those things in mind, because the context means इस तरीके से इस बात को, वर्ड को यूज करा जा सकता है. Not always there is one word that fits everywhere. So you need to, if you are simply listening to me carefully, वो आपको बहुत help करेगा. Antonym improving and enhancing, जिसमें better हो रही हैं चीजें. So lack of sleep can impair cognitive function. Cognitive मतलब दिमाग का. तो lack of sleep हमारे दिमागी function को हानि पहुंचा सकती है. Some kind of harm, some kind of damage could be seen. Disparity is vishamta and asamanta, where there is a difference, inequality. Now, context: age, amount and quality. Mostly age, कितना पुराना या कोई कितना बड़ा है, amount, and that is the quantity, and the quality. In these contexts, especially if there is a difference, then we say the word disparity. Discrepancy and inequality are synonyms. Discrepancy is a slightly different word that we'll also talk about. There is a wrong number in front of us. Okay? Parity and equality are the antonyms where things are equal. There is a significant disparity in wealth distribution among the population. So, difference जो है काफ़ी बड़ा है जहाँ पॉपुलेशन की वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है. इट्स लाइक अ बिग गैप इज देयर रिच और पुअर के बीच में. देन वी हैव द वर्ड डिस्ट्रेसिंगली. डिस्ट्रेस इज परेशान, परेशानी, है ना. डिपेंड्स की नाउन या वर्ब के समान कैसे यूज कर रहे हैं. डिस्ट्रेसिंगली इज एन एडवर्ब. इट मीन्स इन अ वे that will be having anxiety in it, sorrow in it, pain in it, परेशानी से कुछ हो रहा है, in an alarming or troubling way. So ये इसके synonyms हो गए. Comfortingly, soothingly, mitigatingly, all the words जहाँ थोड़ा सा आराम पहुँच रहा है, okay, या आराम करके देकर कुछ हो रहा है. So those are the words जो कि antonym बन जाएंगे.
Distressingly, the situation seemed to worsen each passing day. So, distressingly, the situation seemed to worsen. बहुत ही परेशानी से हमें आगे की बात बोल रहे हैं. That's why the adverb is used in the beginning. ये सिचुएशन जो है वो और खराब ही होती जा रही है हर गुजरते दिन के साथ. अवर्टिंग इज रोकना या टालना, वार्डिंग ऑफ, प्रिवेंटिंग. और किस चीज को प्रिवेंट कर रहे हैं? अनडिजायरेबल ऑकरेंस को. कोई चीज हम नहीं चाहते कि हो, वी डोंट वांट दैट थिंग टू टेक प्लेस टू हैपन एंड वी आर मूविंग इट अवे, प्रिवेंटिंग, वार्डिंग ऑफ. In that case, we use the word averting. Allowing and giving a permission, permitting will be the antonyms. Quick action by the authorities. Authorities ने जो quick action लिए helped in averting a major disaster. Major disaster को दूर भगाना. Disaster is a negative thing. Negative thing को दूर भगाना, avert करने में मदद यहाँ पर हुई. Okay? Yeah. We have two more words and then we will go into the discussion of article. Paralyzed is not always used in medical terms only. कोई भी चीज जहां पे कोई भी सिचुएशन में यू सी असक्त हो गया है कुछ, या कोई एक्चुअली व्यक्ति मूव नहीं कर पा रहा है, लिटरल पैरालाइज, उसको पैरालिसिस हुआ है, तो उस केस में पैरालाइज वर्ड का यूज होगा एज अ वर्ब. रेंडर्ड अनेबल टू मूव और एक्ट. सो नाउ ऑफ कोर्स अ पर्सन अगर है और उसका कोई बॉडी पार्ट नहीं फंक्शन कर पा रहा, मूव नहीं कर पा रहा, तो वो एक पैरालिसिस है. बट एट द सेम टाइम देयर इज अ सिचुएशन जहाँ पे आगे कुछ हो ही नहीं रहा, अटक गई है वो चीज़, मूवमेंट ही नहीं है बट जहाँ होना चाहिए. एट दैट पॉइंट ऑल्सो वी कैन यूज दिस वर्ड. तो इमोबिलाइज, डिसेबल इसके सिनोनिम है. मोबाइल, एक्टिव, प्रोग्रेसिंग, ये सारे इसके एंटोनिम है. फियर पैरालाइज्ड हिम, नॉट लिटरली, बट उसको शायद इतना ज़्यादा डरा दिया कि वो कुछ आगे कर नहीं पाया. एंड ही कुडंट उटर अ वर्ड. सी, वो एक शब्द मूव नहीं कर पाया, एक्शन नहीं कर पाया बोलने का. तो दैट्स वाई पैरालाइज यहाँ पे यूज हुआ है. स्पेलिंग देख लो इसकी, इसके ऊपर मिसस्पेल्ड वर्ड के क्वेश्चंस आते हैं. इम्पेरेटिव, something which is crucial, of vital importance, essential, necessary, mandatory, आवश्यक या अनिवार्य. Anything that is dispensable and optional, that means you don't need it or you may need it, even if it is not there, it is okay, dispensable. ये इसके antonyms हो जाएंगे. It is imperative that we address these issues before they escalate further. तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि ये इश्यूज को हम उसका कुछ करें इसके पहले कि एस्केलेट हो जाए, मतलब और आगे बढ़ जाए. तो नाउ वी हैव टाइम फॉर डिस्कशन ऑफ आर्टिकल. पहले मैं एक बार वापस से आर्टिकल का टाइटल बता देती हूँ आपको. प्लीज लेट मी नो इफ यू गाइज आर एबल टू हियर मी प्रॉपर्ली, सी मी प्रॉपर्ली. दिस टाइम मुझे एक भी पॉजिटिव रिप्लाई आपसे मिला नहीं है.
Good afternoon. Okay, I was waiting for you people to give me some indication so we can start now. Now you can start reading. Let me know once you are done. I'll be asking questions soon. Grammar wale from this part. This is the first half of the article. Giving you 1 more minute to go through it. Done लिख कर भेजो अगर हो जाए तो. Okay, so it says the global economy has avoided the specter of a debilitating recession. So global economy ने एक जो घोस्ट recession का डर है, डर वाला संकेत है, उसको avoid करा है with the IMF last week raising its forecast for worldwide growth in 2024 to 3.2 from 2.9 it had projected in October. So how did this happen, or why they were able, global economy was able to avoid? क्योंकि लास्ट वीक का जो फोरकास्ट है आईएमएफ का दैट शोज कि ग्रोथ जो है 2024 में एग्रीगेट ग्रोथ 3.2 पर है, जो कि 2.9 उसने प्रोजेक्ट करी थी अक्टूबर लास्ट ईयर. The IMF has underlined the fact, means highlighted the fact, that the global economy has with surprising resilience, मतलब बहुत strong होकर global economy has ridden out of several adverse shocks. तो ridden out मतलब बाहर निकली है, बहुत सारे shocks थे, as well as significant central bank interest rate increases जो हुए थे aimed at
ये क्या एम हुए हैं? रिस्टोरिंग स्टेबिलिटी, जो कि प्राइस की स्टेबिलिटी, और सस्टेन ग्रोथ मोमेंटम। ये दो चीज़ें जो हैं इसमें हम देख सकते हैं कि सिग्निफिकेंटली कुछ अच्छा देखने को सेंट्रल बैंक की तरफ से इंटरेस्ट रेट को लेकर देखने को मिला है। दैट इज लार्जली ऑन द बैक ऑफ एडवांस इकोनॉमीज। ऑन द बैक ऑफ मतलब कि ये किसके ऊपर निर्भर था, एक कौन मेजर कंट्रीब्यूटर है? एडवांस इकोनॉमीज, जो कि लेड बाय द यूएस है, अंडर ग्राइंडिंग डिमांड। However, now there is a contrast. The fund has also pointed, there is another thing, of course negative होगी क्योंकि अभी तक तो positive था, a growing gulf between the economic north and south. गल्फ एक्चुअली बोला जाता है एक गैप को, ओके, जो लिटरल फीचर होता है ज्योग्राफी का, बट यू कैन ऑल्सो यूज दिस टू एक्सप्लेन कि एक दूरी है, गैप है, डिफरेंस है। सो फंड ने बोला है कि गैप बढ़ता जा रहा है बिटवीन इकोनॉमिक नॉर्थ एंड साउथ बाय ऑब्जर्विंग। व्हाई फंड इज IMF इज सेइंग दिस? व्हाई द फंड? क्योंकि IMF का एफ अकेला है जो हम यहाँ यूज कर रहे हैं। A troubling development is the widening divergence. एक troubling development है, differences बढ़ते जा रहे हैं between many low income developing countries and rest of the world. For these economic growth is revised downwards. So इन लोगों के लिए जो कि low income developing countries हैं, इनकी इकोनॉमीज के लिए ग्रोथ को हमें रिवाइज करना पड़ा है नीचे की ओर, whereas inflation is revised up. These poorest countries, ये जो poorest countries हैं in Africa, including some Latin American, Pacific Island, Asian nations, had also suffered from the most scarring from COVID-19 pandemic. Scarring means there was an impact which was bad, जिसको भुलाया नहीं जा सकेगा, जो कि COVID-19 से ये countries बहुत ही ज़्यादा affect हुई in terms of estimated drop in output relative to pre-pandemic projections. तो कहाँ पर ड्रॉप हुई चीज़ें? एस्टिमेटेड जो भी आउटपुट था, रिलेटिव आउटपुट था, वहाँ पर, एंड दे वर स्ट्रगलिंग टू रिकवर टू कंपाउंड देयर वोज मतलब दुख। These economies were now saddled with a mounting debt service burden. बहुत सारे डेट ले लेकर ये बर्डन हो चुकी हैं, दैट वाज सीवियरली इम्पेयरिंग देयर एबिलिटी, और उनकी एबिलिटी जो स्पेंड करने की उस पर असर पड़ रहा था। ऑन वाइटली नीडेड पब्लिक गुड्स, वाइटली नीडेड दैट मीन्स समथिंग, सम पब्लिक गुड्स विच आर बेसिक नीड्स इंक्लूडिंग बेटर एजुकेशन, हेल्थ केयर, सोशल नेट्स टू इम्प्रूव फूड सिक्योरिटी। सो यहाँ पर जो बोला जा रहा है, इट इज़ बेसिकली ये इकोनॉमीज जो हैं, अभी एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है दैट पास्ट टेंस का यूज हो रहा है वर और नाउ, जो कि यूजुअली अभी प्रेजेंट को बताता है, हाउ कम दीज टू वर्ड्स आर कमिंग टुगेदर। सो बहुत बार स्टूडेंट्स विल रीड दिस सेंटेंस एंड दे विल थिंक यहाँ पे आर आना चाहिए। इट्स नॉट रिक्वायर्ड। सी द सेंटेंस, उसमें रिक्वायरमेंट है क्या? यू कैन यूज द पास्ट टेंस वर्ड विथ नाउ डिपेंडिंग ऑन हाउ यू वॉन्ट टू कम्युनिकेट समथिंग। इस बात का ध्यान रखना यहाँ पर। माई क्वेश्चन टू यू ऑल, ओके, नाउ आई विल स्टार्ट जस्ट आस्किंग सम क्वेश्चंस, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये ग्रामर वाले क्वेश्चंस हैं। सो पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ दिस वर्ड, no one? It says significant
central bank interest rate increases aimed at. So here it becomes really difficult अगर आप यहाँ से अकेला पढ़ोगे. It could be a noun, increase noun भी होता है, verb भी होता है. बट यहाँ पर वर्ब रेट जो है वो रेट इंक्रीज कर रहा है किसको? वर्ब डजंट मेक एनी सेंस, सो इट इज यूज्ड एज अ नाउन ओवर हियर. ओके, मल्टीपल पॉइंट्स पर इंक्रीज मिल रहा होगा, इंक्रीज नंबर मिल रहा होगा, तो आपको यहाँ पर इंक्रीजेस प्लूरल मिल रहा है. इस सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बताएंगे आप लोग मुझे. सब्जेक्ट एंड वर्ब. Okay, so here there is a big gap between the main verb and the main subject. These poorest countries. Now countries को explain करने के लिए इन से लेकर Asian nations तक explain करा गया है. In Africa including ABCD. But my subject plural is given over here, countries, and उसके लिए had suffered past perfect is used over here. Okay. Same question, give me subject verb agreement in this sentence. Subject verb agreement, that means you need to tell me the subject and the respective verb in this sentence. Come on, think. Small things will help you in improving in error detection and all. I'll be asking one more question out of this part of the article and then आपको second part पढ़वाती हूँ. Okay, no one? I feel like basic on week could 90 days session. Another course be enough for it. Yes, see, this is what is happening right now. So basics, why do you face this problem? कोई भी व्यक्ति basics कैसे weak हो जाता है? Because we do the fundamental course once and then we stop practicing or applying it. Such classes like this one will help you in keeping up with that revision part that you are supposed to be doing. तो आपने रूल्स पढ़ लिए, यू नो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, सिंगुलर के साथ में इज आएगा, हैज आएगा, यू नो प्लूरल के साथ में हैव आएगा, बट हैव यू सीन इट and have you practiced it applying in sentences whenever you are reading or doing questions? So definitely yes, that course तो आपकी मदद करेगा, that course will help you, but at the same time whenever you get an opportunity, classes YouTube पर हैं या कहीं, so try
to revise those rules, those basic things through the practice questions or editorial classes. So यहाँ पे we see these economies were settled. This is economies आपका main noun है, that is your subject, because to से शुरू हो रहा है, that is your introductory phrase to do something. अभी तक मेन एक्शन को करने वाला सब्जेक्ट आया नहीं है, तो यहाँ पे इकोनॉमीज इज द वर्ड, दैट इज द सब्जेक्ट, एंड वर्ड सेटल्ड आपका मेन वर्ब है. वन मोर क्वेश्चन आई वांटेड टू आस्क. पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ दिस वर्ड, observing. No one? It's a gerund, because the by a tree, by a company, after a preposition, what do we get is we get a noun. अब noun नहीं है यहाँ पे, noun नहीं है तो noun की जो कमी है वो कौन पूरा करेगा? A gerund. Okay. You can ask. I mean, I cannot say if I will be able to answer it, but you can definitely ask. Yes. Please go ahead, start reading rest of the part. Very good question. Yash, exactly, I'll tell you that. Please let other students read right now, और फिर जब मैं explain करूँगी पहले आपका आंसर दूंगी. Both are correct in short. When you are done reading, please let me know done.
Done? Okay, so Yash, let me answer you. Whenever we use any word that has the Z version, जैसे आपने लिखा privatization with a Z and Z, or organization with a Z or a Z, that is something जो कि US English में acceptable होता है. They don't use S वाला spelling. UK English में Z वाला spelling is acceptable, but दूसरा वाला भी चलता है. So in India, we don't have such an issue with organization with a Z or an S. So exams में in descriptive writing, both the spellings are acceptable. No issue in that. ऐसे ही color, COLOUR या color COLOR, both of them are acceptable. Just difference of the type of English we are using. In India, basically it is the mixed version. Done reading? थोड़ा टाइम और दे रही हूँ मैं. Okay, let's understand. I mean, you can check how well you have understood, and then you can have something to compare to, no? So IMF's twin development lender. डेवलपमेंट लेंडर जो IMF के साथ साथ चलता है. ट्विन मीन्स बोथ ऑफ देम दे डू or they focus on the same type of thing. They are very similar in nature to each other. That is the World Bank has in a separate report pointed out that for the first time in the century, 100 सालों में, in this century, not but this century, अभी नहीं हुए पूरे, but half of the world's 75 poorest countries were experiencing a widening income gap. So half of what? Of 75 poorest countries. 75 का half बोला है, not half of all the countries. They were experiencing a widening gap with the wealthiest economy. So the gap of wealth is increasing between them and the countries who are the rich countries, marking a historical reversal of development. As the World Bank Group's chief economist Inda Midgill observed in a blog post on the lender's site. अब इनके according, the 75 poorest countries are home to a quarter of humanity. That is 1.9 billion people. तो बहुत बड़ा आंकड़ा है. It's a big number who are the people living in these countries, जो कि poorest countries हैं, and are home to 90% of people facing hunger or malnutrition. And of course, 90% people who go through hunger malnutrition, they are living in these poorest countries. More distressingly, while these countries were midway through what he termed potentially a lost decade, Mr. Gill averred that the rest of the world was largely averting its gaze. मतलब लोग अपना जो है मुंह फेर ले रहे हैं एक तरीके से. Even as the governments in at least half of these nations, even governments were mostly paralyzed by debt distress. Debt की वजह से distress है. जितना टेंशन मिलना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है. मोर डिस्ट्रेसिंगली, मतलब ऑथर यहाँ पे और चिंतित है दैट दीज कंट्रीज जो है हाफ वे में इस तरीके से टर्म कर दी गई है, तो आगे क्या होगा. Citing the examples of South Korea, China, India as countries that had transitioned from being borrowers
अभी एग्जाम्पल दिया जा रहा है साउथ कोरिया, चाइना, इंडिया का, तो इनका जो है ट्रांजिशन हुआ है बोरोवर से क्या बन गए हैं, अब ये इकोनॉमिक पावर हाउसेस बन गए हैं, दैट वर टुडे आईडीए डोनर्स। द बैंक्स चीफ इकोनॉमिस्ट स्ट्रेस्ड, ये बैंक का जो चीफ इकोनॉमिस्ट है उन्होंने कहा, इट वाज इम्पेरेटिव दैट द वर्ल्ड्स रिचर कंट्रीज सपोर्ट फाइनेंशियली सपोर्ट द पुअरेस्ट नेशंस। बेसिकली रिच को सपोर्ट करना है पुअर को। Given that the world needs to tap every reserve, tapping reserve, this is a collocation, मतलब जो भी चीज अगर हम यूटिलाइज कर पा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो वी आर टैपिंग इट। यू शुड टैप योर पोटेंशियल, टैप इनटू समथिंग। सो वहां से हम कुछ चीज का पूरा बेनिफिट खींच ले, दैट इज टैपिंग ओवर हियर। सो टैप एवरी रिजर्व ऑफ इकोनॉमिक पोटेंशियल। क्यों हमें सारे रिजर्व का यूज करना है? टू अचीव यूनिवर्सल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, ताकि सब कुछ शांत से अच्छे से बना रहे, प्रॉस्पर होता रहे, वर्ल्ड लेवल पे ग्रोथ होती रहे, ग्लोबल लेवल पर। इट कैन इल अफोर्ड टू टर्न इट्स बैक ऑन अ क्वार्टर ऑफ इट्स पीपल, बिकॉज वर्ल्ड एज अ होल cannot afford, it's not good that quarter 25% of its people, total जो people हैं, they are suffering, they are into poverty, they are malnourished, they are not even getting the basic fundamental things। तो वो चीज के लिए ऐसे ऑथर ने एंड किया है। Before I ask you any other question that is related to grammar, what is the tone of this passage? बताओ, टोन क्या है? इंफॉर्मेटिव के अलावा, ऑफ कोर्स इट इज इंफॉर्मेटिव, इसके अलावा व्हाट इज द टोन थ्रू आउट द आर्टिकल दैट यू आर गेटिंग टू सी? टोन का क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पूछा जाता है। Stressful, okay, not exactly a tone. Stressful is not a tone, but you are close to it, you are explaining it correctly. So one thing, one tone, prominent tone is concerned, okay, ये tone आपको एग्जाम में मिलती है। Concerned is because we can see that it is something जो कि ऑथर को बॉदर कर रहा है, so he is concerned about it, worried about how things are going to take place ahead. There is another tone which is a tone of urgency, so urgent tone भी बोलते हैं, because here author is ending with we have to do something, we cannot afford to turn our back on a quarter of our people, so urgency भी है, but concerned is one tone जो बहुत clearly यहाँ पर दिख रही है। Okay, quick questions. Okay, so started raining here at my place and now electricity is gone. I want you to tell me the subject and verb, main verb in this sentence. Okay, actually sentence ends here. Okay, so I'm unable to highlight because of that watermark behind, but citing से लेके nations तक, you need to tell me what's the main verb and the subject here.
Come on. So how it goes here, see. Because the sentence is starting with a participle citing the examples. तो वो एग्जाम्पल्स किसके हैं वो वाली बात को कंप्लीट हो जाने दो. साइटिंग द एग्जाम्पल्स ऑफ कोरिया, चाइना, इंडिया. इंडिया ये सब कंट्रीज हैं दैट हैड ट्रांजिशन फ्रॉम समथिंग इनटू समथिंग. द बैंक्स चीफ इकोनॉमिस्ट देखो यहाँ डोनर्स तक इट इज जस्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द बैकग्राउंड जो कि मेन सेंटेंस का है. तो यहाँ पे till the word donors from the word citing, it is just extra detail. From here we do get to see the main sentence. So the economist stressed. Economist is your verb and is your noun, main subject, and verb is stressed. So यहाँ पर sometimes in the sentence right in the between you get to see your subject and verb जिसको आपको check करना होता है. Make sure that you are able to recognize these things properly. Okay. Home to with the word home. To as a preposition with the word home. It is often used whenever we want to talk about कि कौन सी चीज कहाँ पाई जाती है या कोई कहाँ को belong करता है. Where something or someone belongs. So this India is home to tigers. Okay. So tigers यहाँ पर जो प्रजाति है वो पाई जाती है. So home अपने साथ to लेकर यूज करता है. Please make sure that you observe these little things. There was one phrase and another phrasal verb, two things that you should keep in mind. Riding out means surviving something, enduring something. So riding out होता है इसका लेना देना actual riding से कुछ नहीं है. Draw up is a phrasal verb that means to prepare or create something, especially like a document, anything legal, a plan. So उसको जब बनाते हैं तो हम draw up का use करते हैं. Quickly we will do the questions. आंसर करो. No one? Answer is B. Okay. We saw that how the poor countries are still struggling to recover because of the huge debt, especially COVID के time पे जो उन्होंने लिया था. So B is the answer for this one. Second and third question. You have already read the passage. I'm assuming that. So you should at least know the answers of these questions.
For second one, what you can infer about the World Bank's concerns regarding the widening gap. So options are, it indicates a trend of increasing inequality and a reversal of development progress. Yes, reversal की बात करी है, definitely answer is A. It suggests low income countries are outperforming. No, not at all. उल्टा हो रहा है. It implies poverty rates have decreased. No, positive नहीं हो रहा है. It shows poorest countries are on the track. On the track भी नहीं है. In fact, it is going in the opposite direction. Next question is, what inference can be drawn about the role of debt distress in hampering the recovery efforts? So, distress has encouraged countries to invest more. Debt distress has enabled these countries to implement effective reforms. Debt distress की वजह से limit हो गई है ability to invest in essential sectors, that we got to see that even the basic necessities like health care, education and all नहीं हो पा रहा है because of the debt जो कि उन्होंने लिया कोविड के टाइम पे. तो C is the answer. Fourth and fifth one quickly. What you can infer about the IMF's forecast for low income developing countries in near future. IMF का prediction क्या है? It predicts a rapid recovery, बहुत तेजी से होगी. It anticipates continued economic stagnation and challenges, so चीजें लगातार बनी रहेंगी. It expects these countries to attract more FDI and boost their economic growth. It suggests that these countries will prioritize debt reduction and fiscal consolidation over social spending. D को out कर देंगे है सबसे पहले. ठीक है. Now IMF forecast for the countries in the near future. In fact, अगर आप हमारा टाइटल ही देखोगे, the second, that is on the IMF forecast, and the first line says कि IMF ने underline करा है कि global economy has ridden out of many shocks, और साथ ही साथ में एक forecast है कि IMF last week raising its forecast for aggregate growth to be back. तो एक forecast के बारे में यहाँ पे लिखा है. Also it says that the fund has also pointed out a growing gulf कि यहाँ पे gap होता जा रहा है. So in this case we get to see कि IMF का forecast कोई इतना भी हमें supporting वाला नहीं मिल रहा है. Okay, so it anticipates continued economic stagnation. Fifth one, it says the what inference can be made out about the urgency. अभी urgency है, उसके बारे में हम क्या समझ सकते हैं of addressing widening gap and debt distress. It is imperative for ensuring global economic stability. It is secondary concern. It is unnecessary. Unnecessary वाला point एकदम out कर देंगे. It is a long-term issue that can be addressed gradually over time. It is imperative for ensuring global stability and preventing social unrest. तो यहाँ पर जो inference है, जो urgency है, वो actual है. It is imperative. Secondary नहीं है. देखो secondary होना और unnecessary होना almost same tone है. तो B और C को आप हटा सकते हो immediately. Of course, the answer is A. Okay.
रैपिड इकोनॉमिक रिकवरी, सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन पॉवर्टी रेट्स, फोर्थ का ए नहीं हो सकता ना, because the problem is still there. We don't have any hope. Author is not even giving us some kind of thinking in quickly we will get to see some changes. तो fourth का ए नहीं हो सकता आंसर. Okay. Imperative means something which is very essential, है ना, हमने ये word cover किया है initially. I think you were late. So anything that is crucial of importance, that is imperative. Okay, so we are done here. We'll be meeting you guys tomorrow. Tomorrow, under the course, we have class, and that is on Prezi writing. Important topic for descriptive. So be there, and we'll see you guys there. अगर अभी तक लाइक और शेयर नहीं करा है तो कर दो, and subscribe the channel if you haven't done till now. Bye bye. Take care.